Good morning, students. Class 8 Social Studies, Civics Chapter 2nd, Understanding Secularism. Till now, we have read what does secularism means, where it says secularism refers to the separation of religion from the state. We also read the concept why is it important to separate religion from the state. Along with this, we read about what is Indian secularism. Now, moving on for today's concern on page number 24. The last year we saw that Indian constitution has banned untouchability. Now, this decision was taken by the state just to protect, you can say, the violation of the fundamental rights of lower caste, who are also the citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities. As we saw that here, the state power is being separated from the religion or you can say religious communities. But when it is up to the violation of a fundamental right of the lower caste people, and any kind of discrimination or excludes they are being excluded from certain activities, so in that sense or reference, the government has to interfere in between. But still, the interference is in a way that it is not, you can say, it is not hurting anybody's dignity. Okay. Now, moving on to the reading of this text today. The intervention of the state can also be in the form of support. It is just a kind of support because here the government is supporting the low caste people as being a citizen of a country where a democratic rules are being followed. Even they have the rights to enjoy the fundamental rights. So just to protect this, it is done. So it is a kind of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. हमने देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स ग्रांट करता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपनी अकॉर्डिंग्स अपनी स्कूल्स सेटअप करें या कॉलेजेस सेटअप करें. किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड. बहुत सी स्कूल्स और कॉलेजेस में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एड भी यानी एज अ हेल्प होती है जहाँ पे अ पार्ट ऑफ सैलरी कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. Now, in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? Let us see through an example given here. Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. For example, हम समझे जो पहला अमेंडमेंट हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज, यानी वो लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट करता है, रोकता है टू मेक लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं. प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि दे आर प्रोहिबिटिंग द फ्री एक्सरसाइज, यानी किसी भी रिलीजन को वो राइट्स नहीं है कि वो फ्रीली एक्सरसाइज कर रहे हैं. Now, what is mean by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. यानी जो लॉ मेकिंग बॉडी है जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं वो किसी भी रिलीजन को डिक्लेयर नहीं कर सकते एज एन ऑफिशियल रिलीजन. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू एनी वन रिलीजन, किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी भी नहीं दे सकते. In USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. USA में ये जो सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्ट्रिक्ट. यहाँ पे एक दूसरे के अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है. There is one significant way in which Indian secularism differs from dominant understanding of secularism as practiced in USA. जैसे हमने देखा कि USA में जो प्रैक्टिस है secularism की, that is very much dominating, but our Indian secularism is quite different from that. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. यानी हमने देखा कि अमेरिका के जो सेकुलरिज्म में हैं they are following it strictly that they will not interfere in each other's matter. बट हमारे इंडिया में जैसे हमने देखा
जो अनटचेबिलिटी को बैन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज जस्ट टू प्रोटेक्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लो कास्ट पीपल एज अ सपोर्ट, यानी उन्हें वो सपोर्ट कर रहे थे। हमने ये भी समझा कि जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जैसे मैंने अभी बताया कि अबॉलिश की अनटचेबिलिटी को, इसी के साथ द इंडियन सेक्युलरिज्म, दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस अ विस अ विस रिलीजन, यानी रिलीजन टू रिलीजन हर तरह का डिस्टेंस मेंटेन करती है स्टेट गवर्नमेंट कि वो किसी भी रिलीजन कम्युनिटी की डिग्निटी या उनकी किसी भी बिलीफ को हार्म करे। This means that an interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. अगर वो interfere कर रहे हैं, that is only because it is based upon the ideals जो हमारे constitution में present हैं, that the constitution gives people the right that if their fundamental rights are being violated, they have the right to move to the court if a kind of violation is being done or they are being exploited or dominated by some other groups or a particular person. These ideas serve as standards through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. ये जो ideals हैं they serve as a standard, यानी standard maintained है जिससे जज किया जा सकता है कि जो state है whether it is working according to the principles of secularism or not. The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. हमारा जो इंडियन स्टेट है इट इज़ सेक्युलर और बहुत तरह से यहाँ पे काम हो रहे हैं इन डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेक्युलर प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enable us to take action when these violations take place. Now, आप इस last paragraph को समझने की कोशिश करें। This is not to say that there is no violation of these rights. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में किसी तरह का वायलेशन हो नहीं रहा है। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently. क्योंकि इस तरह के violations frequently होते आ रहे हैं, इसीलिए हमने जो हमारे पास constitutional mechanism है उसे बना के रखा है to prevent them from happening. यानी इस तरह की happening अब in future ना हो या possibility हो कि decrease हो रहे, यानी इनके जो you can say downfall होता रहे इनमें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दिस वायलेशन टेक्स प्लेस। यानी हम जब नॉलेज हो जाएगा हम सबको इन राइट्स के बारे में कि इस तरह की राइट्स का जो वायलेशन है वो नहीं होना चाहिए, और हमारी ये जो नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है दैट ओनली एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दिस काइंड ऑफ वायलेशन टेक्स प्लेस। जब तक हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा इन सब के बारे में, वी वोंट बी एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस। नाउ दिस वाज द चैप्टर ऑफ सेक्युलरिज्म वी हैव अंडरस्टूड। I'll discuss the question answers along with this video, so you complete the work as I instruct you in your fair notebooks. So the second chapter of our civics stating understanding secularism is completed. Just go through the chapter, give a thorough reading, word to word, line to line. Unless you give it a proper time to your reading, you won't be able to understand the chapter. For any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.